Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। We have a lot of work to do today because last time जो सेशन हुआ था उसमें पॉइंट्स इतने ज़्यादा थे कि मुझे एक तो ये कि वो मैंने एक दफ़ा जमा तो कर लिए सारे, उसको जमा करने में भी काफ़ी टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। एंड सेकेंडली आई कैटेगराइज देम सो दैट आपके लिए थोड़ा सा स्लाइटली आसान हो जाए उसको याद रखना। मैं आगाज़ कर देता हूँ जी यहाँ से, ताकि आपके रिकॉर्ड पे आ जाए एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा टॉपिक जो है वो तो ज़ाहिर है कि लैंग्वेज लर्निंग और कम्युनिकेशन है। जस्ट टू गेट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। हमने लास्ट टाइम जो किया था दैट वाज एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसको मैंने जो कंपाइल किया है, इसकी जो पहली हेडिंग बनती है वो है इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, इसमें जो लोगों ने पॉइंट्स बताए थे, अब जाहिर है कि ये कैटेगोरिकली हमने कैटेगराइज तो कर दिए, लेकिन अंदर कोई मैंने इसको चेंज नहीं किया बहुत ज़्यादा। कॉन्टिन्यूअली एक्सप्लोर एंड लर्न, रिमेन perpetually curious, become astute observers and learn from observing the creatures around them, develop ideas and theories to explain unknown phenomena, pursue and explore their ideas, develop discernment and more profound understanding, continually reflect and seek revisions in points of view। आपको अगर किसी चीज़ को समझने में मुश्किल हो तो उसको सिर्फ नोट कर दीजिएगा, मुझे फिर बाद में पूछ लीजिएगा। Learn from one's own experiences and those of others, share thoughts with others and benefit from their insights, take knowledge-based action, share knowledge with others, reflect on and correct mistakes। दूसरा जो हेड बना था वो था पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ मास्टरी। इसमें आया था डेवलप एंड एनहांस देयर पोटेंशियल। Number two was become the best version of themselves, live with hope even in adverse conditions, understand and regulate internal processes, improve behaviors, be deliberate in actions, replace bad habits with good ones, practice self accountability, spend time on important things and avoid wasting time on unimportant ones, avoid cluttering the mind with useless thoughts, control their instincts and desires and purposefully direct their lives, perpetually improve their thoughts, outlook, and perspective, value these potentials, use them, and be thankful for them, and act responsibly। इसमें कुछ repetitions भी हैं, लगती भी हैं, लेकिन वो मैंने I just noted them all down so that nobody, क्योंकि subtle differences भी हो सकते हैं जी। Ethical living and moral responsibility is the third heading। इसमें हमने लिखा था, लोगों ने जो बताया था वो था live principle centered responsible lives, take care of prejudices, face challenges with courage, be responsible and sensible in using their abilities, keep the possible consequences of actions in mind, balance the short-term and long-term consequences of actions, develop alternative courses of action to reach goals, be good decision makers, create a long-term vision for themselves, recognize that while we cannot benefit God, that is the creator, we are expected to use our intellect and understanding to benefit his creation through responsible action। I found this to be a very interesting point. Social harmony and contribution. Value differences with others, celebrate differences and create harmony, derive cooperative synergies, learn from those who think differently and evolve as a species, be helpful to others and create a congenial environment as a society, have a positive influence on others, improve their education, health, economics, and society, be contributors rather than just beneficiaries, be aware of the impact of their actions on other people and species। और फिर था जी स्टूवर्डशिप एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूवर्डशिप का मतलब होता है कि अपने आप को अमीन समझना, जो कुछ आपके पास है उसमें अपने आप को इंटरेस्टेड समझना। लर्न हाउ टू बेनिफिट हिमसेल्फ,
themselves and other creatures, understand, care for, and responsibly manage the natural world and other creatures, help all creatures flourish, create goodness in the environment. और फिर था जी moral intelligence and theological insights. ये recognize their unseen creator, use rational faculties to discern and understand the creator, deeply comprehend the guidance from God, be part of the next steps in the intellectual and moral evolution of the human species as a whole. Or finally, there was problem solving and practical wisdom. Find solutions to problems, utilize these potentials to make life easier for themselves and others. यहाँ तक पिछला हमारा सेशन था जी।